ये ऐसा स्ट्रेट रहे तो ऑन रहता, मगर मैं ये ऑलरेडी ऑफ करके रखा, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है टैंक है खाली हो गई, ये ऑन पोजीशन है, ठीक है। अब इसको मैं ऑफ पोजीशन कर दिया। उसके बाद स्क्रू है बेसिकली, उसके ये कैप निकालो, उसके बाद ये पूरा बाहर लेके आने का है, ओके। तो मैं कटोरी यहाँ पर रखा था, ये कटोरी, ओके। इसमें पहले ये वाला छोटा सा क्लिप रहता, क्लिप को ऐसे निकालो, निकाल के इसको ऐसा पुश करो, पुश करो, ये पानी आते सो, ये इनलेट का है रेड वाला, ओके। अब ये जो है ड्रेन का है, ओके। तो सबसे पहले ये निकालो, ये इसमें ऐसा पानी लीक हो रहा है, इसको ऐसा दबा के इसको ऐसा निकाल देना ड्रेन का। ये वाला इसमें से पानी आ रहा है या जा रहा है, आई डोंट नो, तो इसको ऐसा क्लिप जो करके ये निकाल देना, ओके। अब फाइनली वाटर आउटलेट का मसला है, ये ब्लू वाला है, ठीक है। उसमें ये पहले सेफ्टी क्लिप ऐसा निकाल देना, निकाल देके इसको ऐसा दबा के ऐसा निकालना, ओके। तो ये 4 निकल गया ना। ये वाला आउटलेट वाटर का है, ये वाला बकेट का है, ये वाला ड्रेन ब्लैक का है, ये वाटर जो इनलेट वहाँ से आ रहा वो उसका है। अब उसके बाद इसको जो है आई नीड टू टेक इट आउट, थोड़ा हेवी है, ओके, बिकॉज ऑफ वाटर। लाइन फिल्टर नीड्स टू बी चेंज्ड एवरी 1 ईयर। ये आई स्प्रिंग फिल्टर, इसका वाटर फ्लो इधर जा रहा फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, इसका वाटर फ्लो इधर जा रहा है शायद, मगर नहीं बता के हैं, ओके। तो न्यू फिल्टर ओल्ड फिल्टर, न्यू फिल्टर ओल्ड फिल्टर। तो इसमें ये वाला इधर प्लग करना, ये वाला इधर प्लग करना। तो बेसिकली ये निकाल के, ओके, राइट। दिस वन, ये प्रेस ऐसा करके ये निकालना, ओके। ये हो गया। और उसके बाद ये वाला ये प्रेस करके ऐसे निकालना है, ओके। वी आर चेंजिंग 2 फिल्टर सेट। तो ये जो है अल्कलाइन फिल्टर है और उसके नीचे ये दूसरा फिल्टर है, ये दोनों को एक साथ मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये ओल्ड फिल्टर न्यू फिल्टर, ओल्ड न्यू, ओके। तो वंस अगेन इसका जो वाटर फ्लो है इधर, ये वाला आई स्प्रिंग उसका ये वाटर फ्लो इधर रहना, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, ये वाला रिवर्स डायरेक्शन में रहना। तो ये मैं इसमें ऐसा लगा दे रहा हूँ,
ओके, ये लगा दो। तुम्हारे हिसाब से ये निकालना है। फर्स्ट थिंग, ये वाला जो है ये इधर जाने का है। ओके, तो उसमें ये थोड़ा सा इसको ऐसा प्रेस करके ये, अब मैं अपने लिए बोल दे रहा हूँ, अगर फर्ज करो कि ये यहाँ पर फोकस करो, अगर फर्ज करो कि ये वाला फिल्टर यहाँ से पानी लीक हो रहा बोल के मालूम हुआ, तो ये जो पुराना फिल्टर का जो ये है ना, ये लेके मैं इधर डाल देना। ओके, तो वो ही मैं टेक केयर करना हो। अब ये फिल्टर फेंकने से पहले वो चेंज कर लेके मैं रेडी रखना। ओके, तो ये ऐड हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसके लिए क्या था, इसके लिए ये था। ओके, तो ये फिल्टर मैं इसको थोड़ा अंदर दबा के इसको ये दबा दिया। ओके, सो दिस वाज लाइक दिस। ओके, ये नीचे के फिल्टर में फ्लो इज लाइक 2 and 3। ओके, तो उसमें सबसे पहले क्या करना, थोड़ा इसको ऐसा उठाना। ओके, इसको ऐसा उठा के लेफ्टी लूजी राइटी टाइटी। Okay. Okay, old filter, just check the position how it is organized. Filter, sediment filter 5 micron. Any direction, like both the directions are okay, so I'll just put one direction. Okay, so this is the third filter. Now let's open the second filter housing. Third one open. This is the CTO filter. Okay, so as you can see, this is the CTO filter. Now in this is the O-ring. This is the filter O-ring, and this is the housing O-ring. The housing O-ring is proper here. We have cleaned this. Okay, this is the CTO filter, and basically CTO filter is this one.
CTO carbon filter. We need to open this. Okay, now as you can see, this comes with the o-ring. Okay, this is perfect o-ring, and previously this o-ring was very loose. तो ये perfect इसमें आ गया. ये मैं जो है, you need to place it fixed into this. o-ring इसको चिपक के आ गया था. ये ना ज़ैनब o-ring इसकी. तो इसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी. ओके, सो दिस इज़ प्रॉपरली प्लेस्ड and both the direction we have o-ring. Okay, o-ring, और इसमें direction is not important, just make sure that you are properly keeping it. Okay, this is the third filter. Now we are looking at second filter. Okay. So this filter is the second filter called as GAC filter, and this is directional. You see, this is down and this is up. इसको भी पूछूं. तो न्यू फिल्टर, अब देखो ये डाउन ये अप came with a white o-ring. So previous one, the old filter had a black o-ring, right? Yeah, the previous one it had black o-ring, but this is having white o-ring, but this is up. Okay, so we have cleaned this, we have checked the housing o-ring, it is proper, and this is the filter o-ring. We need to keep it exactly in the middle so that it completely fits. Okay, now this is the second one. Okay, now let us start from the third one. So this is basically the third one. Can you change the filters and put them in different positions, or do they have to go in their right positions only? Right positions only. Okay. Because does it filter something first and then goes to the second, Yes, and yes. then to the third? Yes. Okay. 1, 2, 3 in the order. Okay. Filter. पकड़ ली.
नहीं लगा बराबर से। First blue wire. Safety clip, pull it outward, then put the safety clip. Okay. Skip out. के बाद ये थोड़ा येलो एंड ब्लैक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल येलो. Okay, now Safety valve. okay, so as you can see, this is the pipe. So we can press like this to switch it on, and then this is the pipe. You need to turn it clockwise to switch it on. Okay, and as you can see, the water is flowing into the first filter, then the second filter housing, then the third filter housing. It goes to the RO membrane, alkaline filter, and those two filters. And this is how the water is coming. And then you need to switch it on for 15 minutes and let the water drain. After that you can drink.